So now students, we are going to study a very important answer, that is a 5-mark answer, extraction of aluminium metal. Reactivity series, quickly recap. Ka, na, ka, mag, al. Okay, so this is aluminium, the last highly reactive metal. We are going to study how to extract aluminium. Now, let's do a quick introduction about aluminium. It's the first most abundant metal in the Earth's crust. Its symbol is Al. It is having atomic mass 27 Dalton, atomic number 13, electronic configuration 2,8,3. That means 2 electrons in the K shell, 8 goes in the L shell, 3 goes in the M shell. It's a normal element. Which element is called as a normal element? Whose last shell is incompletely filled. क्योंकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका लास्ट शेल इनकम्प्लीट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एलिमेंट. ऑलराइट, उसका वैलेंसी इज 3. इट्स फिक्स्ड, मींस चेंज नहीं होता है. 3 वैलेंसी. अभी वैलेंसी 3 क्यों है? द रीजन इज इट विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स. ये बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन को जाने दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वैलेंसी विल बी 3. दैट वैलेंसी इज फिक्स्ड. Position in the periodic table, as it is having 3 electrons in the last shell, so it is in the third period in the periodic table, and it is in the third A group, or you can say group 13. Alright, now it belongs to P block. We know that in the periodic table there are 4 blocks, S, P, D, F. So this element belongs to. So let's start with Bayer's process. Okay, now we have to take the ore, okay, the bauxite ore. We have to crush this ore into powder, and we have to take it in a beaker. In this beaker, we have taken caustic soda. Caustic soda yani NaOH, sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Now crush the ore, add the ore into this sodium hydroxide liquid. Now what are you going to do next is you're going to heat it. Usko jalao. At 140 to 150 degrees Celsius, you're going to heat it under high pressure. How you're going to create high pressure is you're going to cover this tank, okay? This is all, this tank which you have taken, the beaker which you have taken is called as a digester. Isko aap cover kar doge koi bhi heavy metal lid se, so the pressure inside will be created. Students, heating चालू है, आप उसको cover कर रहे हो, definitely अंदर pressure create होगा. So I repeat, we are taking a tank which is called as a digester. In this digester, we have taken caustic soda liquid, that is nothing but sodium hydroxide liquid. In this sodium hydroxide liquid, we are adding the crushed ore, that's the bauxite ore, which is aluminium oxide, silica and iron oxide. Okay, you cover it with a steel tank, you cover it with a metal lid to create high pressure. As soon as we do this, and we have to heat it for 2 to 8 hours. Let me tell you students, don't forget, you have to heat it for a long time. Okay, so you're going to heat it for a long time. Inside, as you're heating, the reactions have started. The reactions are taking place. And what you are going to get, let's understand. Sabse pehle, aluminium oxide is going to react with NaOH. Al2O3 NaOH से रिएक्ट करेगा और आपको मिलेगा ना allowed to sodium aluminate and पानी, ना allowed to and पानी, NaAlO2 plus H2O. Next is silica, जो sand था, ये silica SiO2 जो आप देख रहे हो, that will get converted. It will react with NaOH and form sodium silicate Next you are seeing is आयरन ऑक्साइड पीसेस NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा है. ये जो Fe2O3 का जो पीसेस है वो ऐसे का ऐसे ही है. इट इज नॉट रिएक्टिंग विद NaOH. आई विल टेल यू व्हाई. आयरन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड. आयरन मतलब मेटल, तो आयरन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड बेस से कभी रिएक्ट नहीं करता है, ये हमने पढ़ा है. मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड्स, नॉट विद बेसिस. तो आयरन ऑक्साइड इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद NaOH. ऑलराइट, इट रिमेन्स एज इट इज. राइट, नाउ why did then aluminium oxide react with NaOH? Because aluminium oxide is a metal oxide, but it's an amphoteric oxide. It can react with acid as well as base. Talking about silica SiO2, it's a non-metal oxide, और non-metal oxide तो
बेस से आराम से रिएक्ट करता है. ओके, तो दीज वर द रीजंस अबाउट द रिएक्शन. अच्छा, अभी हमारे पास बीकर में क्या क्या है? वी आर हैविंग सोडियम एल्यूमिनेट लिक्विड, sodium silicate liquid and iron oxide pieces. Alright, let's see the first reaction. Al2O3 plus NaOH gives you NaAlO2 plus H2O. What is NaAlO2 called as? Sodium aluminate. Okay, now let us balance this reaction. Aluminium 2 on the left side, 1 on the right side. What should I do? Multiply by 2. Bajuwalas got affected. Sodium became 2 on the right side. Sodium is 1 on the left side. What should I do? Multiply by 2. Bajuwalas got affected. See, sodium के बाजू में है oxygen and hydrogen. Oxygen हो गया 2 and 3 on the left side students. Al2O3 में 3 oxygen, NaOH में 2 oxygen. तो 3 plus 2 becomes 5. तो 5 oxygen on the left side. On the right side, there are already 5 oxygen. 2 2s are 4 plus 1 in water. So 5 oxygen. Oxygen got balanced. Let's check hydrogen. 2 hydrogen on the left side, 2 hydrogen on the right side. So the reaction is balanced. Alright. Now, come back to the digester. In the digester, we had 2 things in the liquid state, 1 in the solid state. जो 2 liquid state में वो कौन है? Sodium aluminate and sodium silicate. अब आप मुझे बताओ, हम लोग को आयरन ऑक्साइड पीसेस तो इम्प्योरिटीज है, गैंज है, वो हमको नहीं चाहिए, तो बेस्ट है वो हमको सॉलिड फॉर्म में मिल चुका है आयरन ऑक्साइड पीसेस. तो अगर वो नहीं चाहिए तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फिल्टर दिस लिक्विड. पीसेस जो आयरन ऑक्साइड का है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा फनल पे, एंड वी आर गोइंग टू गेट द लिक्विड इन द डाइजेस्टर, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट का लिक्विड मिल गया. Now students, we know that this liquid is hot liquid, correct? So we need to cool down this liquid. क्योंकि हमने उसको इतना देर heat किया था, तो it was a hot liquid. अब to cool it down, we have added water in it. अभी water add करने से सिर्फ cool down ही नहीं होगा, अंदर reaction होगा, और वो reaction होगा hydrolysis reaction. Alright? Now what is hydrolysis reaction? Let me explain you. हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक. तो वाटर सोडियम एल्यूमिनेट को तोड़ेगा. वाटर के मदद से सोडियम एल्यूमिनेट विल ब्रेक. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट वाटर वी हैव रिटन इट एज H.OH, which is one and the same. H2O can be written as HOH. Alright. Now, as soon as I have added water, sodium aluminate started reacting with water. Okay, now let's see how the reaction is taking place. When you stir this liquid, the aluminate AlO2 will react with hydrogen, okay, and form aluminium hydroxide precipitate. What it will form? Aluminium hydroxide precipitate, which is AlOH thrice. Okay, बचा क्या? Na and OH. Na और OH रिएक्ट करेगा और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाएगा. अब ये जो पीसेस, जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर, दैट्स अ सॉलिड फॉर्म, दैट्स अ प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो आपको अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पूरा प्रेसिपिटेट मिल गया एंड NaOH लिक्विड बन गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड गॉट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. सो लेट्स सी द सेकंड रिएक्शन व्हिच यू कैन सी देयर. हमने वो लिक्विड में वाटर ऐड किया, तो वाटर से कौन रिएक्ट किया? ना अलाउड टू, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट पानी से रिएक्ट करके आपको क्या मिला? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड. ओके, आप बोलोगे सोडियम सिलिकेट किधर है? उसी के अंदर है लिक्विड. ओके, दैट इज नॉट रिएक्टिंग विद the water which we have added, because it's just a sand, it's a form of a sand which is not going to react with water and give you something new. All right, so let's understand the balancing of the second reaction. Sodium 1 on the left side, 1 on the right side. Aluminium 1 on the left side, 1 on the right side. Oxygen 2 plus 1, 3 on the left side. Oxygen 3 plus 1, 4 on the right side. So, left side में 3 ऑक्सीजन है, odd है, I have to make it even. How am I going to make it even? Very simple students. NaAlO2 का ऑक्सीजन तो even है,
तो उसको कुछ नहीं करना है. H2O का जो एक ऑक्सीजन है वो ऑड है, तो मल्टीप्लाई दैट बाय 2. ऑक्सीजन देखो 4 हो गया है, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन 4. ओके, but as soon as you multiplied water by 2, बाजू वाला got affected. Hydrogen became 2 2s are 4. On the right side, hydrogen is 3 plus 1, 4. So the reaction is balanced. Alright. Now, what all things do we have in the beaker? Let's quickly revise. We have sodium silicate liquid, sodium hydroxide liquid, and one precipitate which is aluminium hydroxide. Now students, we are going to filter this. The question will be why? आप मेरे को बताओ, सोडियम सिलिकेट हम लोग को नहीं चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम सोडियम सिलिकेट में नहीं आता है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोडियम सिलिकेट. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी Al दिखाई नहीं दे रहा है, NaOH में Al है नहीं, तो हम लोग को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सिलिकेट नहीं चाहिए. ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है और हमको जो चाहिए वो सॉलिड फॉर्म में, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट विच इज इन द सॉलिड फॉर्म. तो जो हमको सॉलिड चाहिए हम लोग को वो मिल जाएगा बाय जस्ट फिल्टरिंग. ओके, फिल्टर पेपर पे इस बार फनल पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, उसको हम नहीं फेंकेंगे इस बार, दैट वी नीड इट. और जो लिक्विड है नीचे दैट वी कैन थ्रो इट. ओके, because we don't need the liquid. Now take this precipitate of aluminium hydroxide जो आपको फनल पे मिला है, उसको एक बीकर में ले लो और वो बीकर को स्टैंड पे रखते हुए उसको बर्नर से हीट करो. आप देख रहे हो जैसे ही आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1000 डिग्री सेल्सियस पे इग्नाइट करोगे, मतलब हीट करोगे, तो वाटर वेपर गोज अवे, H2O चला जाएगा और जो अंदर सॉलिड बचा है बीकर में, दैट इज what you wanted, that is aluminium oxide Al2O3. Alright, so let us see the last reaction. Aluminium hydroxide, that is AlOH thrice, when heated at 1000 degrees Celsius will give you aluminium oxide Al2O3 and water, that is pani gaya hawe mein. Alright, now let us balance this reaction. Aluminium 1 on the left side, 2 on the right side. So on the left side, what should I do? Multiply by 2. Baju wala's got affected. Oxygen became 2 3s are 6 on the left side. Oxygen is 3 plus 1, 4 on the right side. I have to make 6 oxygen on the right side. How am I going to do that, students? 3 already Al2O3 में है, 3 भी ऑड है, H2O में एक ऑक्सीजन है वो भी ऑड है. कुछ इवन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको इजीली 6 कर सकते हैं. Al2O3 में 3 ऑक्सीजन है, वाटर में एक ऑक्सीजन है, 3 plus 1 4 हुआ, लेकिन अपने को 6 चाहिए. कैसे करेंगे? Al2O3 का 3 ऑक्सीजन वैसे ही रखो, 3 प्लस क्या 6 होता है? 3 6 होता है. तो आई मल्टीप्लाई वाटर बाय 3. जैसे ही मैंने वाटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, आप देखोगे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है. 3 ऑक्सीजन वाटर का, 3 ऑक्सीजन Al2O3 का, 6 हो गया. आपने वाटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, बाजू वाला ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन बिकेम 3 2s are 6. Hydrogen on the left side, students, if you see, is already 6. 3 2s are 6. Alright, so the reaction is balanced. Now, this full process is Bayer's process. We wanted aluminium oxide and we got aluminium oxide. आप सोचोगे मैम एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो हम लोग के पास पहले से ही था, फिर ये इतना बड़ा प्रोसेस क्यों किया? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो आपको ओर मिला था ज़मीन के नीचे, जो वो स्टोन मिला था, उसके अंदर आयरन ऑक्साइड और सिलिका कचरे के फॉर्म में अंदर ही था, जो हमको उसमें से सेपरेट करना था. आयरन ऑक्साइड अभी नहीं है, सिलिका नहीं है, क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसेस करके दोनों को निकाल दिया है. ओके, तो नाउ वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड. Is the extraction of aluminium over? No, this is just the first step. Okay, aluminium oxide मिला है. Second step में हम लोग ऑक्सीजन निकाल देंगे by reduction, by passing current, and then we'll get aluminium. All right. So this Bayer's process is a 5-mark answer. All right. So students, we just now studied Bayer's process.
in which we got alumina. कौन सा मीना? Alumina. That is, we got aluminium oxide, Al2O3. Correct? Now students, we are interested only in aluminium metal. We do not want the oxygen which is there along with aluminium metal. Okay, so we are going to remove oxygen. Removal of oxygen is called as reduction. Alright, now removal of oxygen करने के लिए we are going to pass electric current. So step 2 is electrolytic reduction of alumina. Now for this we are going to take a steel tank. Alright, now this steel tank we are going to coat it inside with graphite. उसको बोलते हैं lining of graphite. So we have coated the steel tank with graphite. Okay, now you can see an outlet at the right side. That outlet will help us to collect aluminium metal in the molten state, yani ki in the liquid state. Alright, drop by drop we'll collect it from that outlet. Now we are taking 4 graphite rods. Alright, now these 4 graphite rods, with the help of wires, we are connecting it to a battery, and again you can see a wire which is connected to the inner lining of the graphite. Alright, so this is how is our apparatus arranged. We have taken a steel tank. Inside the steel tank we have done the lining of graphite. We have taken an outlet from where we can collect the aluminium metal. We have 4 graphite rods which are made of carbon. These graphite rods, with the help of wires, we have connected to a battery. Again a wire, that wire connected to a inner lining of graphite.